Hi students, today in this video I am going to start the chapter carbon and its compound specifically for class 10 student and as per the syllabus prescribed by NCERT. Okay, so let's start the chapter carbon and its compound. And my advice, you should note down all important points and you should always go through the study material provided by the coaching institute, our coaching institute Naman Educations. So whatever topic I am completing during the video classes, you should go through that particular topics through our study material. Okay, so you should be ready with pen and notebook to start the chapter. And just note down the name of the chapter, carbon and its compounds. Carbon and its compounds. For class 10 Cbse Ncert students. Okay, so the chapter is related to carbon and its compounds, and you should first know about the element carbon. अगर मैं आपको पूछूं what is the symbol for the element carbon, it is C and its atomic number. अगर पूछा जाए आपको इसका atomic number क्या है, atomic number of carbon is 6. Electronic configuration, if it is asked what is the electronic configuration, electronic configuration of carbon is 2,4 Kl. Okay, and its valency is 4. It has 4 valence electrons in its outermost shell and its valency is 4. Then carbon is an element. Now what type of element it is? ये कैसा element है? Metal, non-metal, metalloids, inert gas. So carbon is a non-metal element. It is non-metal element. Okay. Now occurrence. Carbon nature में किस form में मिलता है? Occurrence of carbon, if I ask you, carbon is found in nature in free state as well as in combined state. It is found in nature in free state as well as in combined state. Okay. So what are the two forms in which carbon is found in nature? Carbon is found in the free state as well as in combined state. अब example, अगर आपको पूछा जाए, give 2 examples where carbon is found in free state in nature. Best examples are diamond and graphite. Then examples where carbon is found in combined state, they are carbon dioxide, carbon monoxide, all the carbonates, CO3 2 minus ion जिसमें होगा, all the carbonates जैसे calcium carbonate, sodium carbonate. Okay, then in hydrocarbons में, for example, methane, CH4, carbon is found in combined state. जितना भी bicarbonates और hydrogen carbonates जैसे sodium bicarbonate, NaHCO3, फिर cyanide में, carbide में, carbon is found in combined state. So carbon is an element which is found in both free state as well as in combined state. Okay, note down everything from screen. Now my question, if I ask you name some materials that you use in your day-to-day life and that materials are made up of carbon, which element? Carbon. So such example, the food that we eat, it contains carbohydrate, proteins, vitamins, lipids, सब में carbon होता है. Carbohydrates are the compounds of carbon, hydrogen and oxygen. जैसे आपको formula याद होगा, formula for glucose. If I ask you what is the formula for glucose, it is C6H12O6. तो हम लोग जो food consume करते हैं, उस food में maximum जो compounds are, they are carbon compounds. Okay, vitamins, they are also containing carbon. Then clothes that we wear, then medicines, book
and many other things around us. They are made up of what? Carbon. Pen, the lead of the pencil, they are also made up of carbon. हम इवन अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन है. अर्थ क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज क्या है? इट इज 0.02%. देन एटमॉस्फेयर में यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. एंड जो परसेंटेज अगर आपको पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में परसेंटेज क्या है, आपको आंसर देना चाहिए 0.03%. और आप अगर ज्यादा एक्यूरेट बोलना चाहते हो 0.035% यू कैन से. सो यहाँ पे बात हो रहा है कि आपका डे टू डे लाइफ में जो मटेरियल्स यूज हो रहा है उनमें कार्बन है कि नहीं. तो आप अपने चारों तरफ जब देखोगे तो आप देखोगे मैक्सिमम जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो अपना डे टू डे लाइफ में, प्लास्टिक यूज कर रहे हो, ओके, पेन यूज कर रहे हो, बुक्स यूज कर रहे हो, क्लोथ्स यूज कर रहे हो, इवन पेंट, इन सब में भी क्या है? कार्बन और इट्स कंपाउंड. ओके, सो कार्बन इज प्रेजेंट इन कोल, इट इज प्रेजेंट इन पेट्रोलियम. एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर चुके हम लोग. आप बता सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में अगर इसका परसेंटेज इंक्रीज हो जाए और तो क्या प्रॉब्लम हम लोग को आने वाला है? क्या प्रॉब्लम नेचर में आने वाला है? नेचर में जो प्रॉब्लम हो वो होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत और प्रॉब्लम एसोसिएटेड है इनके साथ, that will affect our life also. Then carbon is present in the body of plants, animals, okay, as carbohydrate, protein, vitamins. तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कार्बन हम लोग का लाइफ को कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है. हम लोग के चारों तरफ जो मटेरियल है उनमें कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. देन कार्बन के बारे में अगर बात करें हम लोग, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4. आपको अगर पूछा जाए कि कार्बन एटॉम को स्टेबल होने के लिए या स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए इसको किसका कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहिए, तो आप बोलोगे कि इफ कार्बन एटॉम डोनेट्स द 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, अगर कार्बन एटॉम अपना आउटरमोस्ट शेल का 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इट विल फॉर्म C4+ और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, जो कि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है. तो 2 4 से 2 हो गया कॉन्फ़िगरेशन. तो आप बोलोगे ये स्टेबल हो गया, लेकिन कार्बन कैन नॉट डोनेट द 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. अब आप बोलोगे वो क्यों? ज्यादातर एलिमेंट में, एटॉम में आपने सुना ऐसा होता है, दे कैन डोनेट टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस. बट व्हाई कार्बन एटॉम कैन नॉट डोनेट? उसका रीजन आपको ठीक से समझना है. यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होता है, और कार्बन का फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 एंड 4. ओके, तो क्वेश्चन ये था कि why carbon atom cannot donate the 4 electrons present in the outermost shell to form C4+ cation. Why it cannot donate? Because of the small size. Because of the small size. Carbon atom का size बहुत छोटा है, and because of that क्या है कि the 4 electrons which are present in the outermost shell are strongly attracted towards the nucleus. Because of the small size of the carbon atom, the electrons which are present in the outermost shell, they are strongly attracted towards the nucleus. इसीलिए कार्बन एटॉम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता. तो आप सोचोगे कार्बन एटॉम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. If a carbon atom gains 4 electron from other atom, it will form C4-. So configuration 2-4 से हो जाएगा क्या? 2-8. अब 2-8 किसका कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है. आप बोलोगे कार्बन ने स्टेबिलिटी एक्वायर कर लिया है, बट ये भी पॉसिबल नहीं. A carbon atom cannot donate 4 electrons present in the outermost shell. A carbon atom cannot gain 4 electrons from other atoms. क्यों नहीं गेन कर सकता? The reason is that the 6 protons which are present in the nucleus cannot hold on to
ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। ये 6 प्रोटॉन में इतना एनर्जी नहीं कि वो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन आने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 एंड इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड दैट 10 इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग बोल सकते हैं अ कार्बन एटॉम is not having sufficient energy, it does not have sufficient energy to hold on to 10 electrons. Okay, so thereby carbon atom cannot gain 4 electrons, carbon atom cannot donate 4 electrons. तो अब क्या ऑप्शन क्या बचा? A carbon atom shares its 4 electrons, कार्बन एटॉम अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है with the atoms of अदर एलिमेंट और विद अदर कार्बन एटॉम। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, एज इन केस ऑफ मीथेन, एक कार्बन एटॉम अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसके साथ? 4 हाइड्रोजन एटॉम्स के साथ। और कार्बन का इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, हाइड्रोजन का डॉट, सो क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट एंड क्रॉस एंड डॉट। ओके, so what we are discussing here, a carbon atom cannot donate 4 electron to acquire C4 plus ion, a carbon atom cannot gain 4 electron to acquire C4 minus ion, positive ion को हम लोग बोलते हैं cation, negative ion को हम लोग बोलते हैं anion। तो कार्बन एटॉम स्टेबिलिटी एक्वायर कैसे करेगा? कार्बन एटॉम स्टेबिलिटी एक्वायर करेगा by sharing its 4 electrons. So a carbon atom always shares its 4 electrons present in the outermost shell. इसीलिए कार्बन का वैलेंसी is 4. Since ये शेयर ही करता है always, इसलिए always कैसा बॉन्ड फॉर्म करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। और इसीलिए कार्बन का वैलेंसी को बोला जाता है कोवैलेंसी। तो आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, इट इज 4। ओके, तो यहां हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि कार्बन एटॉम इलेक्ट्रॉन जो 4 इलेक्ट्रॉन्स का आउटरमोस्ट शेल में वो डोनेट क्यों नहीं कर सकता, और वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एटॉम से गेन क्यों नहीं कर सकता? कार्बन एटॉम क्या करेगा? कार्बन एटॉम ऑलवेज शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। कौन सा? नियॉन। एंड देयरबाय इट्स वैलेंसी इज 4। और कार्बन का वैलेंसी शेयरिंग की वजह से इसलिए कोवैलेंसी, और मोर प्रॉपर्ली कार्बन इज कॉल्ड टेट्रा कोवैलेंट एलिमेंट। टेट्रा कोवैलेंट एलिमेंट, टेट्रा का मतलब 4 और कोवैलेंसी 4, इसलिए कोवैलेंट। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। जस्ट नोट डाउन एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रीन and I hope you have noted down everything. I am moving to another screen. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं what is covalent bond. So covalent bond क्या होता है? Covalent bond is a type of chemical bond. Bond का मतलब क्या? Bond is a kind of force. It is attractive force which binds the atoms together. So covalent bond, it is a type of chemical bond. It is a type of chemical bond which is formed by sharing of electrons. Sharing of electrons between atoms, and especially between non-metal atoms. Non-metal atoms. Metal atoms involved nahi hota covalent bonding. Okay, if you look at the example, you can easily understand what is covalent bond. So by definition, covalent bond kya hai? What is covalent bond? If I ask you, it is a type of chemical bond which is formed by sharing of electrons between atoms, and especially non-metal atoms. So if you look at the example, you can easily understand hydrogen ka atomic number 1 hai. It has 1 electron in the outermost shell. Chlorine
का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 on 1 electron in the outermost shell. Chlorine 2 8 7, so it has 7 electrons in the outermost shell. So 1 2 3 4 5 6 and 7 electrons in the outermost shell. तो आपको अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, आंसर है हीलियम। क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, आंसर इज आर्गन। So why do atoms take part in chemical bonding? Atoms of different elements other than noble gases, they take part in chemical reaction to acquire the electronic configuration of nearest noble gas. तो हाइड्रोजन को किसका कॉन्फ़िगरेशन में आना है, हीलियम। क्लोरीन को किसका कॉन्फ़िगरेशन में आना है, दैट इज आर्गन। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, देन हाइड्रोजन के पास 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को नहीं दे सकते, देन ऑप्शन क्या बचेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे, शेयरिंग। सो वन हाइड्रोजन एटॉम शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विथ वन क्लोरीन एटॉम। हाइड्रोजन एटॉम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसके साथ, क्लोरीन एटॉम के साथ। ओके तो हाइड्रोजन शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन विथ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन एटॉम का आउटरमोस्ट शेल में और कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6। नाउ अब क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, अगर ये सर्कल देखो आप, क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। दे हैव शेयर्ड वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग इसी को बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। And in this way hydrogen chloride molecule is formed. Okay, so यहाँ हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे, we have discussed about covalent bond. If I ask you what is covalent bond, it is a type of chemical bond which is formed by sharing of electrons between atoms. Okay, and there are 3 types of covalent bond: single bond, double bond and triple bond. Single bond is formed by sharing of one pair of electron, double bond sharing of 2 pair of electrons, and triple bond by sharing of 3 pairs of electrons. तो यहाँ पे हम लोग इसी के साथ एक और टर्म डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज कोवैलेंसी। ओके, कोवैलेंसी, द कोवैलेंसी of an element. The covalency of an element is defined as the number of electrons shared by one atom of the element during covalent bond formation. ओके, तो आपको ये पता चल गया बाय डेफिनेशन व्हाट इज कोवैलेंसी। कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटॉम। तो वन हाइड्रोजन एटॉम इज शेयरिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे वन क्लोरीन एटॉम इज शेयरिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1। तो आपको अगर HCl का केस में पूछा जाए हाइड्रोजन का कोवैलेंसी क्या है, आंसर 1। क्लोरीन का कोवैलेंसी क्या है, आंसर 1। ओके, सो वी डिस्कस 2 important terms here. What is covalent bond and what is covalency? Just note down both the definitions. I hope you have understood the meaning of these 2 important terms. तो आपको अगर पूछा जाए what are the 3 types of covalent bond, तो आपके पास सिंपल आंसर है 3 types of covalent bonds. They are 3 types of covalent bonds. They are, first one, single bond, and single bond is denoted by single dash, and it is formed by sharing of
one pair of electrons between atoms. One pair of electrons between atoms, single bond. ओके देन एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं मैं आपको सिंगल बॉन्ड क्या होता है. जस्ट हाइड्रोजन क्लोराइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था. एक और एग्जांपल फॉर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन, एक और एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं हम लोग. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H plus H will give what? H2. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल. और हाइड्रोजन को किसका कॉन्फ़िगरेशन में आना है? नियरेस्ट नोबल गैस इज हीलियम. तो 1 हाइड्रोजन एटॉम shares its electron with other hydrogen atom, and एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से both the hydrogen atoms acquire electronic configuration of nearest noble gas helium. Since one pair of electron has been shared, so hydrogen, single bond hydrogen, and in this way hydrogen molecule is formed. तो आपको अगर पूछा जाए यहाँ पे what is the covalency of hydrogen? It is 1. Covalency क्या होती है? Covalency is defined as the number of electrons shared by one atom. So one atom of hydrogen is sharing how many electrons? One atom of hydrogen कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है यहाँ पे? 1. Thereby its covalency is 1. So what are the 3 types of covalent bond? अगर पूछा जाए 3 types of covalent bond: single bond, double bond, and triple bond. Single bond, double bond, and triple bond. Single bond we have already discussed. अब हम लोग बात करेंगे about double bond. Double bond is denoted by double dash. Okay, and it is formed by sharing of कितना pair of electrons? 2 pairs of electrons between atoms. Example से और clear हो जाएगा. If we discuss about oxygen molecule, oxygen molecule कैसे form होगा? O plus O will give what? O2. Oxygen का electronic configuration 2, 6. It has 6 electrons in the outermost shell. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6 electrons in the outermost shell. और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 electrons. अब मैं आपको अगर पूछूं कि ऑक्सीजन एटॉम को स्टेबल होने के लिए किसका कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहिए और उसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए उसका नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन. नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन में आना है. नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन 2,8. इसका मतलब एक ऑक्सीजन एटॉम को 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है. So these 2 oxygen atom will share 2 electrons each. दोनों ऑक्सीजन एटॉम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. एक ऑक्सीजन एटॉम का 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑक्सीजन एटॉम का 2 इलेक्ट्रॉन. एंड नाउ 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4. और आप देख सकते हो ऑक्सीजन has acquired 8 electron in the outermost shell. Acquiring 8 electron in the outermost shell, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं octet. And acquiring 2 electrons in the outermost shell as that of helium, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं duplet. क्या बोलेंगे? Duplet. तो oxygen has acquired octet in oxygen molecule, and oxygen double bond, oxygen will give what? Oxygen molecule. आप चाहो तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं. डिपेंड्स ऑन यू. नहीं दिखाने से भी कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है. ओके, सो वी डिस्कस्ड व्हाट इज डबल बॉन्ड. What is double bond? Double bond is a type of covalent bond which is formed by sharing of 2 pairs of electrons between atoms. और अब हम लोग बात करेंगे about triple bond. Triple bond, and it is denoted by triple dash. Okay, and it is formed by sharing of 3 pairs of electrons. 3 pairs of
electrons between atoms. 3 pairs of electrons between atoms. Okay, तो यहाँ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात होगा, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटॉम्स। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल we can consider nitrogen molecule N plus N will give what? N2, electronic configuration 2 5, it has 5 electrons in the outermost shell, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, it is 5 electrons in the outermost shell. अब एक नाइट्रोजन एटॉम को कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नीरेस्ट नोबल गैस टू एक्वायर स्टेबिलिटी? अगेन सेम क्वेश्चन, तो आंसर होगा इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन। किसका कॉन्फ़िगरेशन में आएगा? नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? इट इज नियॉन। ओके, सो one nitrogen atom shares 3 electrons with other nitrogen atoms. So 1 share हो गया, 2 share हो गया, 3 share हो गया, 3 pairs, 2 यहाँ पे रह गया, 6 और 2 8 हो गया, 2 यहाँ पे 6 and 2 8 हो गया, दोनों ऑक्टेट एक्वायर कर चुका है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन will give what? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो आपको यहाँ पे अगर पूछा जाए व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, द सिंपल आंसर कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, क्योंकि बाय डेफिनेशन वी नो व्हाट इज कोवैलेंसी। ओके, सो कार्बन के बारे में अगर हम लोग को डिस्कशन करना है तो हम लोग को ये भी पता है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कार्बन का वैलेंसी क्या है? 4 है। और कार्बन फॉर्म्स हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड्स? The carbon atom forms 4 covalent bonds. Okay, how many covalent bonds? 4. So ये कार्बन का 4 कोवेलेंट बॉन्ड, देखने से लगता है यहाँ एंगल कितना है? 90 डिग्री। किसी भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में इन बॉन्ड्स को, चारों बॉन्ड को किस एंगल में दिखाया जाता है? 90 डिग्री, बट ऐसा नहीं है। These 4 bonds are directed towards the 4 corners of a tetrahedron. और ये बॉन्ड जो है इन दोनों नियर बाई बॉन्ड के बीच में एंगल इट इज 109.5 डिग्री अप्रॉक्स है। ठीक है, आप बोलोगे ऐसा कैसे? ऐसा तो लग नहीं रहा यहाँ पे, तो आपको मैं समझाता हूँ अबाउट दिस बॉन्डिंग और उसका डायरेक्शन। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, तो उसके बारे में आप जान लो। ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, मैं एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूं। इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल फिगर जो मैं ड्रॉ किया हूं, इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रॉन। दिस इज टेट्राहेड्रॉन। और चारों ट्रायंगल अगर इक्वल हो तो इसको बोला जाता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ओके, तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में कार्बन इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट एट द सेंटर, इसके अंदर सेंटर में कार्बन है, एंड इट्स 4 बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। कार्बन का चारों बॉन्ड का डायरेक्शन ये होता है, और 2 नियर बाय बॉन्ड के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज 109.5 डिग्री। आप मीथेन मॉलिक्यूल का केस में जानते हो, मीथेन CH4, मीथेन में जो 4 हाइड्रोजन एटॉम्स है वो यहाँ पे होगा एक्चुअल में, 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो आपको अगर पूछा जाए इन केस ऑफ मीथेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल HCH, तो आंसर होना चाहिए 109.5 डिग्री। So a carbon atom always forms 4 covalent bonds, and its 4 covalent bonds are directed towards the 4 corners of a regular tetrahedron, 4 corners of a regular tetrahedron। और ये जो वैल्यू है आपको याद रखना है 109.5 डिग्री। और हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि
कार्बन एटॉम ऑलवेज 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा किसी भी कंपाउंड में. द रीजन इज दैट a carbon atom cannot donate 4 electron, a carbon atom cannot gain 4 electron. Okay, so till now we discussed about single bond, double bond, triple bond, और हम लोगों ने डिस्कस किया about the directional nature of the covalent bonds formed by carbon. Okay, तो अब हम लोग बात करेंगे कि कार्बन एटॉम ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, कार्बन एटॉम ऑलवेज 4 इलेक्ट्रॉन शेयर ही क्यों करता है, कार्बन गेन क्यों नहीं करता, कार्बन एटॉम डोनेट क्यों नहीं करता टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस. तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 2-4. इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. कार्बन एटॉम अपना 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके C4 प्लस आयन क्यों नहीं बनाता, क्यों वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ सकता. द रीजन इज दैट स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटॉम. कार्बन एटॉम का साइज बहुत ही स्मॉल है. इसके अंदर 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, और ये स्मॉल साइज की वजह से द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट in the outermost shell, the electrons which are present in the outermost shell, they are strongly attracted towards the nucleus. साइज छोटा होने की वजह से बाहर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, they are strongly attracted by the nucleus. इसलिए ये कार्बन एटॉम इनको डोनेट नहीं कर सकते. एक कार्बन एटॉम जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो किसका कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, C4 माइनस हो जाएगा. कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2-8 नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन. बट अ कार्बन एटॉम कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस. क्या रीजन है उसका, क्या रीजन हो सकता है? द रीजन इज दैट ये जो 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा डिफरेंट शेल्स में? इट विल बी 10. ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन था, 4 ऐड हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन. एंड 6 प्रोटॉन कैन नॉट होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन. ये इसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है. एंड thereby a carbon atom cannot gain 4 electron to acquire electronic configuration of neon. अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? कार्बन एटॉम को स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए क्या करना होगा? कार्बन एटॉम शेयर्स इट्स ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स, okay, with other carbon atoms or with the atoms of other element, or with the atoms of other element. Okay, so इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया. एज इन केस ऑफ मीथेन का अगर बात करूं मैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो यहाँ पे कार्बन एटॉम is sharing all its 4 electrons. So valency of carbon is 4. Its valency is called covalency. Okay, now in this part of class we will discuss about homoatomic molecule and heteroatomic molecule. Homoatomic molecule are those molecules which are formed by same type of atoms. You know that molecules are formed by combination of atoms, and if a molecule is formed by combination of same type of atoms, like H plus H will give what? H2. Cl plus Cl will give what? Cl2. So these are homoatomic molecules. तो heteroatomic molecules क्या है फिर? For example, hydrogen with chlorine will give HCl.
heteroatomic molecule. Nitrogen with hydrogen will give what? Ammonia molecule. This is heteroatomic molecule. Similarly, carbon dioxide is heteroatomic molecule. Water molecule is also a heteroatomic molecule. So what is the difference between homoatomic and heteroatomic molecule? Homoatomic molecules are formed by same type of atoms, and heteroatomic molecules are formed by different type of atoms. Now, in the next part of class, we will discuss about characteristic properties of covalent compounds. So at first, you should know what is the meaning of the term covalent compound. Meaning of the term covalent compound. So those chemical compounds which are formed by covalent bonds are covalent compounds. So covalent compounds are those chemical compounds that are formed by covalent bonds. Okay. Now their properties. First characteristic property that we are going to discuss about their physical state. Covalent compounds exist as or exist in the gaseous state. Their physical state, most of the covalent compounds are found in gaseous state. Okay. And why they are found in gaseous state? Because the molecules are attracted to each other by weak force, and because of that the particles are widely separated, and that makes their physical state as in gaseous state. So covalent compounds are usually found in gaseous state. Examples like NH3, ammonia, carbon dioxide, okay, then methane, sulfur dioxide. All these are covalent compounds and which are found in gaseous state. But there are also covalent molecules, covalent compounds which are found in liquid state, like H2O. It is found in liquid state, like benzene, C6H6, found in liquid state. And covalent compounds are also found in solid state, like glucose, C6H12O6, it is found in solid state. Like urea, formula of urea is CONH2 whole twice. It is also found in solid state. So characteristic property, if I ask you about the physical state, covalent compounds are usually, or they are mostly found in gaseous state. And the reason is that the molecules in covalent compounds are bonded to each other by weak force. Okay, that weak force is called van der Waals force. Is called what? Van der Waals force. Van der Waals force. Okay, so this is the first characteristic. Now second one about covalent compounds, about their melting point and boiling points. Melting point and boiling points. Covalent compounds have low melting point and boiling point. इनका melting point, boiling point कम क्यों है? Because the molecules of covalent compounds are weakly attracted to each other by a kind of weak force, and that force is van der Waals force. Van der Waals force. Okay. So covalent compounds का low melting point, boiling point होने का reason क्या है? Weak van der Waals force. A weak van der Waals force होने से melting point, boiling point low क्यों हो गया? Because less amount of energy in the form of heat is required to convert solid into
लिक्विड एंड लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होगा तो कम एनर्जी से ही ऐसा हो सकता है कि नहीं, कम एनर्जी से ये पॉसिबल है। So because of weak van der Waals force, covalent compounds have low melting and boiling points. Now, third characteristic properties of covalent compounds about their electrical conductivity. About their electrical conductivity. Covalent compounds, they are poor conductors of electricity. Poor conductors of electricity. इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर क्यों है कोवेलेंट कंपाउंड्स? बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक मीथेन, लाइक बेंजीन, these compounds, covalent compounds, if you dissolve them in water, they will not dissociate into ions. They will not dissociate into free movable ions, positive ions and negative ions. Okay, so thereby they are poor conductor of electricity in any state, whether solid, liquid or gaseous state. So we discussed three characteristic properties of covalent compounds. Covalent compounds are mostly found in gaseous state. Then covalent compounds have low melting and boiling points. About their electrical conductivity, they are poor conductor of electricity, but there is exception. Some polar covalent compounds. Polar covalent compounds, they are good conductor of electricity. If you dissolve them in water, they will form movable ions, and that movable ions make them good conductor of electricity. Like hydrogen chloride gas, ये equivalent compound है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, it will dissociate to form H plus and Cl minus, और ये H plus बाद में कन्वर्ट हो जाएगा into hydronium ion. So covalent compound, they are poor conductor of electricity with exception. Then number 4, about solubility. Solubility. Covalent compounds, they are insoluble in water. They are insoluble in water. They are insoluble in water, but they are soluble in organic solvents. They are soluble in organic solvents. Organic solvents जैसे बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, क्लोरोफॉर्म that is CHCl3, and alcohol, toluene. These are organic solvents. So और जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. The reason is that covalent compounds do not dissociate to form ions. Okay, so if I ask you 4 important characteristic properties of covalent compounds. Number 1, covalent compounds are mostly found in gaseous state. Number 2, covalent compounds have low melting and boiling points. Number 3, covalent compounds are poor conductors of electricity with exception, and covalent compounds are insoluble in water but soluble in organic solvents. Okay, now if it is asked to you write down some differences between ionic compounds and covalent compounds, अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए बोला जाए ionic compounds and covalent compounds, some differences. तो ionic compound और covalent compound, ionic compounds, they are formed by transfer of electrons. They are formed by transfer of electrons. And covalent compounds, they are formed by
sharing of electrons. They are formed by sharing of electrons. With ionic compounds, they are formed by reaction between metals and non-metal atoms, metal and non-metal atoms, and covalent compounds, they are formed by reaction between non-metal atoms. So non-metal जब non-metal atom के साथ react करेगा तो sharing of electron होगा and covalent compounds form होगा. Then ionic compounds, they have high melting point and boiling point. Covalent compounds, they have low melting point and boiling points. Okay. Then ionic compounds के बारे में, they are soluble in water. They are soluble in water but insoluble in organic solvents. Or covalent compounds, they are insoluble in water. They are insoluble in water but they are soluble in organic solvents. Okay, but कुछ ऐसा covalent compound है जो polar covalent compound, they are soluble in water. So ionic compounds में हम लोग ये लिख सकते हैं soluble in water but insoluble in organic solvents. Inorganic, sorry, they are insoluble in organic solvents. और यहाँ they are insoluble in water but they are soluble in organic solvents. तो आपको अगर पूछा जाए give 2 examples of organic solvents, best example benzene and chloroform. Toluene भी लिख सकते हैं आप. Okay, benzene, chloroform, ethanol, all of kerosene, they are what? Organic solvents. Then about electrical conductivity, ionic compounds, they are good conductors. They are good conductors of electricity in molten state. And in solutions, because you know that they dissociate to form ions. But covalent compounds, they are poor conductors of electricity. They are poor conductor of electricity. Okay, so these are the differences between ionic compounds and covalent compounds. Now my suggestion is that you should read page number 1 and page number 2 from the study material provided by our coaching institute, so that you can get proper understanding about these topics. After watching this video, you should go through that page number 1 and 2 from the study material. So sufficient for this particular video class. Thank you for watching.